which helps you reverse various health conditions, not 1 2 but 154 plus health conditions. So आज के इस 6th episode में हमारे साथ है Mr Anupam Fotedar. He has over 18 plus years of experience in software field. उन्होंने बहुत बड़े कंपनी में काम किया है, जैसे ऑटोडेस्क हुआ, HP एंटरप्राइज हुआ, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज है. इसके अलावा इनका सोशल कॉज की तरफ भी बहुत इंक्लिनेशन है. इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत की है, जिसमें ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, यूथ फॉर पुनन कश्मीर, स्ट्रीट टू लाइफ जो कि एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है. साथ ही साथ ये आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. और रिसेंटली ये स्टार्टअप वर्ल्ड में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना खुद का एक स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, Batoob. So Mr Anupam sir, welcome to the show. Thank you so much, Prasad. I am privileged to be here and happy to interact with you. Great. So अनुपम सर, मेरा आपसे फर्स्ट सवाल ये है, मैं हर एक एंटरप्रेन्योर से यही सवाल पूछता हूँ कि आपने जो अपना स्टार्टअप शुरू किया है Batoob, बैक टू बेसिक्स, इसकी स्टोरी क्या है? ये आपको इंस्पिरेशन या फिर ये आइडिया कहाँ से आया और आपने कहाँ से शुरुआत की? So a very interesting question and very common question. Everybody thinks कि भैया एक IT world से आप आए हैं, आपने almost 20 years of very successful career in IT world, then why you got into this domain, which is like an alien for everyone, IT लोगों के लिए specifically. Right. So for me, it was very close to heart. I belong to a village. My childhood has gone entirely in the village, and I had privileged to work closely with farmers during my almost 10 to 12 years of my age. So I have seen how they had been practicing, what are the right way of they produce the food, because remote areas में काफी कम एक traditional way में farming होती थी, because there were transportation के issues होते थे, आजकल के जो chemicals है वो भी नहीं पहुंचते थे. So that was one of the things which I was privileged to have that insight. And definitely while I traveled across the world, across the globe, then I realized, I see everyone is craving for good food. हर एक को अच्छा खाना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है. So जब भी किसी से बात करो तो they used to talk about, अरे वो हमारे पुराने दिन, हमारे ancestors ऐसा खाते थे, हमारे दादाजी ऐसा खाते थे, हमारे ये सब सुनते सुनते कहीं ना कहीं एक concept दिमाग में बना that why not we go to back to basics. So back to basics is we go the way how traditionally our forefathers used to eat, why they were so strong mentally, physically, and socially also. Right. So that led me to think about a concept of back to basics. So back to basic, this name Batoob has been derived from back to basic. So if you see back, B-A-O-O, and B, so which is actually derived from back to basics. So we have put an infinity symbol into it so that the horizon remains infinity. It's not only, so we say 360-degree consciousness. Right. It's because food is most important thing. We are made of, as a human, 5 elements. उन्हीं से सब चीजें बनती है. So वही हम है. So it is about right from your day-to-day life to your spiritual goals. So 360-degree concept लाने के लिए उसको infinity का horizon दिया. So that's why the concept came as in Batoob. Right. Yes. तो मुझे एक हमारे जो व्यूअर्स है उनको जरा बताइए कि what are all the products that Batoob offers? So Batoob has started with the concept of 3 verticals, because when we say we have to have infinity as an horizon, so everything starts from wellness, well-being. When you first and foremost know about your made of your body, Ayurvedas में भी वैसे ही define किया गया, body type को define किया जाता है. So we have started the thought that we will first understand the nature of an body. एक family में हम लोग एक शुरुआत किया wellness से, जहाँ पे हम लोग उनको we see what's the type of they have as a body and what are the needs. Precisely जैसा body है, अगर वैसे demands को fulfill करते हो, तो certainly your performance and productivity will be high. So we have offered under wellness one section where we start with. Then we do groceries. So groceries is a range of products which are right from everything which you do in everyday life, जो आप हर दिन खाते हैं, जो रूटीन में खाते हो. And we went to the farm because that's the freshest thing जो हम लोग everyday consumption होता है, vegetables, milk, wheat, आटा, गेहूं, ये सब चीजें रूटीन में आती. So we deliver products in 3 verticals. One is farm,
जहाँ पे हम लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स करते हैं, आटा करते हैं विच इज डेली रूटीन में लगता है आपको, ऑयल्स करते हैं विच आर कोल्ड प्रेस ऑयल्स, and then we move to groceries, is all range of groceries which are organic certified groceries, because there are certification, 100% certification must for any organic business. So हम राइट लोग NPOP NOP certified products वहां पे करते हैं. Then wellness products, we have wide range of products which are majorly health supplements, but they are organic, natural. I mean the concept of raw, wild and organic is our tagline. उसी ओके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं प्रसाद. ग्रेट 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 Yes. सो आपने कई सारे प्रोडक्ट बताए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है और अभी हम लोग इंडिया में ट्रेंड देख रहे हैं कि नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट रूरल एरियाज में भी लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं वन ऑफ द जी रीजन की इसके हेल्थ बेनिफिट्स है तो मुझे जी. आपसे ये जानना है कि अदर देन हेल्थ बेनिफिट्स ऐसे क्या बेनिफिट्स है जो लोगों को पता होने चाहिए कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें पहले जबकि आपने भी ग्लोबल लेवल पे टच किया, ओवरऑल मार्केट की बात की, तो दिस इज वेरी बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चन. तो मैं उसे बिजनेस लाइन में पहले आपको थोड़ा आंसर करता हूँ. हमें ये देखना होगा फंडामेंटली जो ऑर्गेनिक बिजनेस है अराउंड द वर्ल्ड, जब हमने थॉट प्रोसेस कंसीव किया अराउंड 2020 में, उस समय पे करीबन 380 बिलियन की मार्केट थी, ये ग्लोबल मार्केट. 380 बिलियन डॉलर्स की ग्लोबल मार्केट थी. और जब इंडिया में देखा हमने, उस समय पे अराउंड 900 मिलियन डॉलर की मार्केट थी ये. सो 2020 की बात है, और जो कि कंटिन्यूअसली एक 20-21% से ग्रो हो रही है. राइट सो दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग डोमेन है, एंड इसके बेनिफिशियरी डायरेक्टली फार्मर्स है. सो राइट हमने ये थॉट लिया कि हमें नॉट ओनली जस्ट, जैसे कि आज ट्रेडिशनल आप देखोगे ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स व्हाट दे डू, ये लोग परचेज करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे सेल इट. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई हैव एनालाइज्ड, but they are purely doing business, which is commerce, and nothing bad about that. But we at Batoob thought to, as our name is back to basics, so हम लोग रूट पे चलेंगे. We start working with farmers. राइट हमने फार्मर्स को कैसे ऑर्गेनिक, जिसे हिंदी में दे कॉल इट सेंद्रीय खेती इन महाराष्ट्र, दिस इज राइट ऑर्गेनिक फूड, कैसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, आप उसे कैसे कल्टीवेट किया जाए. बाकी फूड को दे कॉल ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग फूड, जिसे कन्वेंशनल बोलते हैं. बट राइट मेरा हमेशा ऑब्जेक्शन रहा इस बात पे कि कन्वेंशनल वो होता है जो सदियों से चला है. राइट तो एक्चुअली कन्वेंशनल वे ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनिक फूड. तो राइट राइट फार्मर्स एक्चुअली वो जानते थे, वो वही करते थे, जनरेशन से करते थे. राइट राइट और आप और मैं भी फार्मर्स हैं, बिकॉज हमारे डीएनए में हजारों सालों से हमारे पूर्वज वही करते आ रहे हैं. करेक्ट राइट तो वी हैव द विलेजर्स को सिर्फ हमें कॉन्शियस करना पड़ा. भैया राइट आप जो कर रहे हो आज, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स से यूज कर रहे हो, आपको दिखता है उसमें प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसमें आप सॉइल का जो टेक्सचर है लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको डैमेज कर रहे हो. राइट मेरा बिकॉज अगला आप, सवाल आपको इसी के ऊपर है आपने जी जी फार्मर्स और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात की जी जनरली ये पर्सपेक्टिव रहता है फार्मर्स का कि मुझे ज्यादा से ज्यादा उसमें से मिलना चाहिए जो भी मैं धान लगा रहा हूँ सो जी उसके लिए केमिकल यूज करना बहुत सारी चीजें आती है तो उन फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ ले जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता होगा जी. सो आपके क्या चैलेंजेस रहे या फिर आप उनको क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो शिफ्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ विदाउट हैम्परिंग द प्रोडक्टिविटी. देखिए, दो चीजें हुई हमारे देश में, अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, जिन्हें एक माइलस्टोन माना जाता है एग्रीकल्चर में. एक तो व्हाइट रेवोल्यूशन, आपने सुना राइट होगा. व्हाट दूसरा इज ग्रीन रेवोल्यूशन. राइट ये दोनों ऐसी चीजें थी जिन्होंने इंडिया को बहुत जल्दी ही ग्लोबल रोड मैप पे लेके आए, ऑर्गेनिक या फूड के रोड मैप पे लेके आए. उस राइट समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कि हम लोग फास्ट ग्रो करें और हम लोग एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दें. अदरवाइज हम लोग जो कर रहे थे, दैट वाज मोर ऑथेंटिक एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक ही है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग कल्टिवेशन, वो हमारे फार्मर्स जानते थे. लेकिन बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज वो शिफ्ट किया गया, एक मेक शिफ्ट हुआ, एक शिफ्ट हुआ एक इंडस्ट्री में. सो राइट फार्मर्स का डायरेक्शन जस्ट चेंज हुआ, यील्ड बढ़ा. बट इफ वी रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे फार्मर्स अब ये कंप्लेंट करते हैं कि जो ऑल ऑफ ए सडन ग्रोथ हुआ, वो वैसे ही अब डिक्लाइन भी हो रहा है. उनको ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है. दैट मीन्स दियर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट जो यील्ड करने के लिए है, वो बढ़ रहा है. दैट मीन्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है. राइट राइट So now when they had been using organic way of doing it, organic में अब लैंड को वापस आपको फर्टाइल करना है. फर्टाइल करने के लिए, उसका कार्बन कंटेंट मेंटेन करने के लिए करीबन 3 साल का रेसिडुअल पीरियड रहता है. आई एग्री, पहले साल में
जब वो उस माइंडसेट से ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं, यील्ड ऑलमोस्ट 40 30 to 40% कम होता है। राइट। बिकॉज कि एक एक सॉइल को एक आदत हो गई है ना, एक बॉडी की, केमिकल। आज आप पेप्सी और कोक पीते हो ना, 4 दिन नहीं पियोगे तो यू विल ऑल्सो फील दैट। राइट बट राइट व्हेन यू गो टुवर्ड्स अ हेल्दी वे, यू हैव टू गिव अ ब्रेक। उस समय पे राइट। थोड़े आपके चैलेंज होंगे। सेकेंड ईयर में आप अराउंड 20% तक लेके आते हो डेफिसिट को। ओके। उसके बाद थर्ड ईयर में यू आर ऑल सफिशिएंट। बट हम्म। व्हाट यू आर डूइंग फ्यूचर के लिए आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, देन द ग्रोथ विल बी मच मोर आफ्टर थर्ड। सो राइट। इट्स बिट ऑफ पेशेंस। एंड देन टुडे आल्सो देयर आर फर्टिलाइजर्स विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जो सॉइल को डैमेज नहीं करते, वो मिलते हैं। सो टुडे राइट। देयर इज अ बिग इंडस्ट्री अराउंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो सॉइल को कोई डैमेज नहीं करते हैं, एंड वो भी यूज करके आप इमिडिएटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। एंड वाह। बेस्ट थिंग फॉर फार्मर्स, आपने स्पेसिफिकली बोला, आज देखिए फार्मर्स, आज एक कॉन्शियसनेस है, आज आज इकोनॉमिकली कंट्री इज वेरी गोइंग साउंड, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। हर राइट। इंसान जो अपने आप के ऊपर एक 10% खर्च करते थे, आज वो अपनी इनकम का 15 से 20% खर्च कर सकते हैं। राइट। एंड दे कॉन्शियसली नो, जो हम एक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी कमोडिटी, आप आलू प्याज की बात करिए, जो सब घर में जाता है अक्रॉस द कंट्री, बेसिक टमाटर, ये सब चीजें जाती है। अब ये प्रोडक्ट्स के लिए आप अगर 10 रुपए केजी कन्वेंशनल में देते हो, you will not afraid to pay 12 or 15 rupees kg for that, when it is helping you in your day to day life, because राइट। per capita income बड़ा है। लोग most of the, even मेरा एनालिसिस ये है कि अगर एक बॉडी, यू एज एन प्रसाद, यू विल बी, आज आप अर्निंग कैपेसिटी में अगर आप 100 रुपीज अर्न करते हो, आप द बॉडी विच ब्रिंग्स दिस 100%, आप सिर्फ 7% खर्च करते हो उस पर। इट इज राइट। इनजस्टिस। So people need to increase that mindset, and when they increase that mindset, they start spending more on food, which is on their body, and wellness, well-being. It helps farmers. So राइट। एक shift नजर आ रहा है, और farmers are very much getting encouraged. आपको भी government की काफी schemes भी आए हैं. I think राइट। farmers are slowly moving out of this mindset. That's why I said 21% growth is which you have to keep in mind. That means this is the राइट। shift which is happening in the industry. करेक्ट करेक्ट। Yes. और आपने फार्मर्स की बात की, मुझे ये जानना है कि इंडिया में तो डिमांड बढ़ रही है इसकी, जी। ऑर्गेनिक फूड लोग ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप इसमें काम कर रहे हैं। बट अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो अगेन ग्लोबल लेवल का एक मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की। तो व्हाट इज योर स्टडी, लाइक इंडियन फार्मर्स हो या फिर जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनके स्टार्टअप्स है, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल फूड मार्केट, ऑर्गेनिक फूड मार्केट? मैं फिर से रिपीट करूंगा वो नंबर्स जो मैंने पहले कहे थे। आप देखिए, अराउंड $380 बिलियन इंडस्ट्री 2020 में थी, विच इज अराउंड फोर, विच हैज क्रॉस 410 बिलियन at this राइट। while we are speaking, राइट। and this is growing at the rate of almost 20% year on year. Specifically Indian farmers के लिए, because Indian foods are considered globally very neat and clean, and soil content what we have, and these products has been, there's a huge demand internationally. आप देखेंगे आज exports चाहे fruits में हो, grapes, pomegranate, we are the major exporters of those products. Wheat, we are the very major exporters for those products. So राइट। overall industry ecosystem जो है, जो इसमें business के लिए उतरना चाहते हैं, जो लोग ये business करना चाहते हैं, I will certainly want to see that there should be more players who should come and start, working with farmers. Not only make it as a trade, because trade is not going to help anyone. That's a commerce. They can, if they are just here for the trade, they can pick up any other IT business or something where they can make quick bucks. But राइट। if you really, your heart is into it, you are doing service to nation, you are doing to service to humanity, आप उसमें grassroots level पे involve होइए. I, with my personal experience, can tell you there's a huge market, and the company like us, we started very small. So within just 6 8 months, we reached around thousands of people. We वाह। sold almost, and now lakhs liters of milk products we supply. हमने नेटवर्क क्विक फास्ट किया, मतलब जो छोटे राइट। से पुणे के छोटे से एरिया से शुरू करने से आज हम अक्रॉस द सिटी डिलीवर कर रहे हैं, हम वाह। मुंबई डिलीवर कर रहे हैं, एंड डिमांड इज सो फॉर पीपल हु नो us in Delhi and other metro cities, they're asking when you are going to come up.
वाह। which मेरा would अगला सवाल आपसे यही था experience. कि Yeah. मिल्क के ऊपर आपने जी. मिल्क की बात की, एंड आई आई एम नॉट रॉन्ग, मिल्क इज योर फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो। सो इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि लाइक व्हाई यू चूज मिल्क एज फ्लैगशिप प्रोडक्ट? Very interesting question. One, certainly, if you ask me from the business perspective, Prasad, it is foot in the door हम्म। strategy. सो फुट इन द डोर इज आपको एक मौका मिलता है अपने कस्टमर के साथ डेली इंटरेक्ट करने का, बात करने का। राइट। आप वो एवरी डे यू डिलीवर नॉक देयर डोर एंड दे नो हु यू आर, what is your quality parameters, and they keep giving you constant feedbacks, good or राइट। bad is subjective. So that is the business strategy what we picked up. But if you ask me the other side of it, milk. So milk एक ऐसी चीज है जो कंज्यूमर डेली कंज्यूम करता है। ओके। उसमें you can change your food, you change your, you can go veg to non-veg, vegan, everything, lot many things, but milk is something you consume every day if राइट। you are not vegan. राइट। So अब एवरी डे नाउ हाउ मिडिल, इफ यू गो न्यूज़पेपर्स, आप आर्टिकल्स देखिए, मिल्क का मेजर कंसर्न है एडल्ट्रेशन। हम्म। सो अगर आज पूना में 10,000 लीटर का एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर प्रोडक्शन होता है, मतलब एक 10 लाख लीटर का प्रोडक्शन होता है और 12 लाख लीटर स्प्रेड हो रहा है, तो ऊपर का 2 लाख लीटर आ कहां से रहा है जब प्रोडक्शन नहीं है? राइट। So राइट। that is the big question mark. Then the studies have been done. There has been a lot of adulteration which are happening in this domain. Not only the water, जो एक traditionally बोलते हैं दूध में पानी कितना है. Not only राइट। that, but there are many other adulterations which are happening in this industry. यूरिया होता है, hormones होते हैं जिससे productivity enhance की जाती है, and all that things when we saw at the end result of it is it is impacting wellness of our customers. राइट। So why not to keep it neat and clean and simple? You produce milk organically and supply it to your customers. Make them understand that this is the organic and pure milk, the raw wild and organic concept से जो हम देते हैं. So it brings you the real wellness. अब जो processes होती मिल्क में, उसमें vitamins, minerals, aminos ये सारे क्रश हो जाते हैं in राइट। the process. So actually, traditionally, by the logic of our Vedic culture, milk was consumed because it was helping in your brain development. उसमें अमीनोज होते थे, आज प्रोसेस में वो खत्म हो रहे हैं। हम राइट। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्योर ही प्रोडक्ट लेके आ जाए कस्टमर तक, एंड देन दैट विल गिव देम द प्योरेस्ट फॉर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब वैलिडेशन की बात है, ट्रेसेबिलिटी इशू, एज आई सेड देयर, क्यों अगर बाकी करते हैं तो हम क्यों नहीं करते, या हम क्यों नहीं कर राइट। सकते? नो, दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी दैट. I will राइट। answer you. We are coming with the concept of traceability. हाँ। Traceability concept will be our own. One is the government compliances, NPOP, NOP certifications and all. And unfortunately, I am saying it with very responsibility कि वो सिस्टम अभी उतना मैच्योर नहीं है कंट्री में, राइट। उसमें भी गैप्स है और लीक्स है. बट हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हम एक ट्रेसेबिलिटी कंसेप्ट के साथ ये प्रोडक्ट को आपके लाए. सो आवर packaging will have one QR code which you ओके। can scan, and we will display all the 30-40 tests which happen in our ISO certified lab. You can see ओके। it on every day कि आज के बैच में क्या क्या टेस्ट हुए हैं, उनके रिजल्ट्स क्या है. if ओके। it is failed any result, we will not take that batch for production. वाह। We will reject it. There are certain parameters. So that is why milk was one of the things where we thought we can do a lot of value addition, and राइट। we picked that product as flagship product. Yeah. मेरा अगला सवाल आपसे यही था जो आपने आंसर किया कि हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, सो लाइक कंपटीशन चाहिए भी, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम दैट क्राउड? यही सवाल था मेरा आपसे, और आपने कुछ हद तक उसका जवाब भी दे दिया. अगर आपको कुछ और ऐड करना है कि हाउ डू यू Right. डिफरेंशिएट योरसेल्फ? For me personally, when I started this entrepreneurship journey, I always have a mindset that competition is the best thing what we have, राइट। because वो कभी आपको complacent नहीं होने देते हैं. राइट। So we have kept certain benchmarks. We see in industry mein there are players who are doing extremely well. So I may not name them, but I can certainly tell you that we are following some people. We राइट। see that there's good happening in the industry, and there are people who are doing lot of under the cover of organic foods, and they do certain practices. I will again not name them, but then we know.
We are not going to do that. Right. So that way, competition is most important thing, and I respect all the competitors, and I will love to have an ecosystem developed around this food, and I will encourage youths like you or the people who are starting those journeys. They should come forward and start nurturing this entire Right. system, food system. Yeah, that is my Definitely. thought on Your competition. story is in fact very inspiring. So a lot of youngsters who are watching this will definitely get inspired to venture into this field. My next question to you is like, what are your plans for future? Where are you seeing Batoob in next 5 or 10 years? Long horizon, but an humble beginning. I think we will ensure that we are now, as in first was B2C direct business, which we Mm-hmm. wanted to go set up a prototype with almost 500 plus customers. Mm-hmm. So where we will understand how business should happen really. I Right. think in first year we have attained that, and we have reached those customers, and we have set certain parameters for us for our growth. Mm-hmm. So not only in numbers, I mean 2x, 3x, these are just the business numbers, but as an experience to the customers, we are setting up clusters across the cities. So first we have picked up Pune. So we will set experience centers across the city. सो Okay. जहाँ पे लोग एक ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, हाउ इट कुक्स, वो उसमें टेस्ट कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, हाउ इज इट, वी आर पुटिंग दोज एक्सपीरियंस सेंटर्स अक्रॉस. So those experience centers will be our dedicatedly and education centers for people who can come there, who can understand, feel the journey of start the journey of organic foods and wellness across. So we will multiply those centers. So possibly in coming 1.5 year we should have almost 10 centers in one city. As of now, Pune, we have successfully two. We have two, one in Pimple Sodagar, one in Wakad area in Pune. Then NIBM, we have set up some system around where people can come with our one of our partners there. So Mm-hmm. इसी तरीके से हम लोग ग्रो करना चाहेंगे, एंड वी विल मोर वर्क ऑन अ क्लस्टर बेसिस. वी विल प्रेफर कि हम एक सोसाइटी के एक सेक्शन को पूरी तरह से करें. वी विल नॉट स्प्रेड, we will slowly go. If I say a small place, at least we should see 50% customers in that area are touched by Batu in Wow. one way or other way. Right. So that is the philosophical idea about the growth. On the number wise, I think we would want, as you have also put it, we want to be global leaders in this, and next 10 years is a journey which we have set for that. So among global top 10 organic food companies, we should be working towards that. Definitely. And great leadership like you, there is no doubt कि वो बहुत ही जल्दी और आसानी से अचीव होने वाला टारगेट है आपके लिए. No, thanks for the compliment, but I can tell you one thing, Prasad. Life is full of challenge, हाँ. and as and when they comes, we have to face it. And I'm not alone in the journey. I think we have partners and people like you around who come forward and support whenever we go wrong. And leadership is not an just one man show. It is the Right. people all around. I may be the face for a while, but at the end of the day, it is the It's team. entire set of people today. Almost 100, around 100 people are associated with us. Right. So in one way or other way, they all are our part of this leadership, and Yeah, yeah, look yeah. forward to take it ahead for them, and yeah, for the organization. Definitely. So we are talking about health and wellness, and this question is very personal. मुझे आपसे जानना है, और मैं ये क्वेश्चन हर एक बिजनेस पर्सन से पूछता हूँ, बिकॉज एक परसेप्शन बना हुआ था कि बिजनेस पर्सन इज अ वेरी बिजी पर्सन, उसके पास टाइम नहीं होता है. सो आई वांट टू नो कि लाइक हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, और आपने हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान देते हो? A very valid question, and you have answered it very well. Yes, initially, I mean, I had been always an health conscious person. The tagline also, raw, wild, and organic, is something which fits me. I can have anything, and I can survive in any environment. But at the same time, I can eat any food. I have no barriers for that. But at the same time, I keep I ensure that it is contributing the way how my body requires. Right. And then I had been practicing sometimes. I mean, during childhood, I was an karate champion. I Wow. worked. I was very very close to sports.
मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, जब टाइम मिलता है मैं जिम जाने की कोशिश करता हूँ एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स, एंड आई एंश्योर दैट आई स्पेंड सम टाइम विद माय किड्स एंड माय right, फैमिली, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। right, आपका सबसे बड़ा इकोसिस्टम है आपका परिवार, एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी, वी गेट टू right, लर्न ऑल्सो वो हाउ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फैमिली होती है जो आपको नेचर देती है। सो right, अगर आप उससे सीखते हैं, आई थिंक दैट इम्पैक्ट्स द बिजनेस ऑल्सो। लास्ट 1 year was very tough, certainly, when I was majorly serving high profile jobs. That time, you can manage things the way you are, because there are organization में बहुत सारे लोग होते हैं, चीजें मैनेज हो जाती है। right, right. बट यहाँ पे everything was starting from when I started, we directly jumped to the farm. हाँ, हमने कई महीने खेत में ही काम किया है। देयर वॉज wow, नो शेल्टर, देयर वॉज जस्ट ग्राउंड एंड हाँ, वन एक छोटी सी कंबल, उस पे हम लोग रहे हैं विद द टीम, सम पीपल, एंड वी स्टार्ट डूइंग फार्मिंग इन द आवर फार्म्स देयर। एंड आई थिंक वो ग्राउंड से सीखना था। सो वो समय उसमें रहा, एंड डेफिनेटली एज आई हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल लेते हैं एज एंड व्हेन इट परमिट्स, and trying to create that balance for myself, because everything will start from you know right, right, individual. right. Yeah, No, brilliantly answered. yeah. Yes. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने मेंशन किया कि आपने जैसे फार्म में शेल्टर भी नहीं था, वहां पर काम किया, बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई जो कि एक स्ट्रगल दिखाती है। तो ये स्ट्रगल करने के लिए भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, और हर एक इंसान का कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है, कोई पर्सन रहता है, बुक रहता है, कोई इंसिडेंस रहता है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपका ऐसा क्या फैक्टर था मोटिवेशन का, जिसने आपको हर दिन जो आप काम कर रहे हो उसे करने की आपको एनर्जी दी? मुझे लगता है देखिए, इसके आंसर्स बहुत कुछ हो सकते हैं। इवन प्रसाद, यू आर माय मोटिवेशन। ओह, सो थैंक मोटिवेशन, या मोटिवेशंस आर, देयर आर lot many angles to the motivation, what motivates you in day to day life. बट स्पेसिफिकली, जब ये आप पॉइंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो पर्सनली व्हाट आई फील, एक कंपल्सेंसी जब आ जाती है, सो यू नीड टू हैव कंटिन्यूअसली, यू हैव टू इमर्ज एज एन इंडिविजुअल, irrespective of which domain you are, getting into and what you are doing. But then you need to learn, continuous learning, you. Right, and interacting with people, and finally creating something which is required for the society, right, so that when you leave, when your work is done, when you say I am done, that day when you look back, you should see that there are certain milestones where you have leaving them for the people, at least make their life easy and better. That right. is, for our progenies and future. So that motivates me, that keeps me Wow. most of the time alive. Right, brilliant. And now this question is for youngsters, जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, since you have like 18 plus years of experience in top MNCs, आपका social cause की तरफ भी inclination है, and now you are entering into the startup ecosystem जहाँ पर आप खुद का अपना एक startup लेके आ रहे हो। और बहुत सारे यंगस्टर्स रहते हैं जिनको स्टार्टअप में आना है, पर पता नहीं होता है कहाँ से शुरू करें, आना भी है या नहीं है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सो उनको आप क्या कहोगे कि व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल यंगस्टर्स हु आर लाइक वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट स्टार्टअप? So, I mean, the most important thing is passion. If they have desire to do it, I can tell them directly, to your audiences who are today online or who will be hear this content later, that passion to do something is most important thing. But it Right, should not be passionate, should not make you fool or foolish. right, It is always important that you do your preparations well. आप right, एक्सपीरियंस लीजिए, आप होलिस्टिकली चीजों को समझिए। when you become start an entrepreneur journey, it's not only the thing which you want to do, it is all about the things which you don't want to do. hmm, आप जो करना चाहते हो तो आप कर ही सकते हो, बिकॉज आप जानते हो आपको करना चाहते हो, बट उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपके डिफरेंट चैलेंज रहते हैं, राइट फ्रॉम सेटिंग अप योर ऑर्गेनाइजेशन, देन फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर योर टीम, then finding the right processes in the place, then continuing those processes, usko continuity mein, or at thinking of a time when you are not there, what hmm, is your backup, right, contingencies. So right, यहां तक आपको डीप थॉट्स लेने चाहिए,
and then you should take your first step. And it's not, there is no age or there is no limit to be an entrepreneur. You need to be young by your intellectual, you need to be ideologically आपको strong रहना चाहिए. And I Right. think they can, it's not late कि आप 10 साल में entrepreneur बने, 30 साल में बने या 50 साल में बने. और we have ample examples, people after 60 are entrepreneurs, you know. Ajit sir, Ajit is my co-founder in Batoob. He Hmm. is almost 65. He started journey now with me, Wow. right? He's an Very agro inspiring. scientist. He is an agro scientist, and there is no age limit. I can tell anyone who want to be an entrepreneur, please have that passion alive, and then think about all the things apart from what you want to do, and Right. build an expertise or find right people, and then start the journey. Last thing and most important thing, never compromise with your values. Right. Correct. डेफिनेटली आपने बहुत सारे टच पॉइंट दिए और ये एज अ गाइड बहुत सारे यंगस्टर्स को काम करेगा बिकॉज आपने एक अलग ही एंगल आज मतलब डिस्कस करते हुए बता दिया कि जो आपको करना है वो तो आपको कर ही दोगे बट आपको वो भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जो आप नहीं कर सकते हैं सो दिस इज अ वैल्यू एडिशन वैल्यू पॉइंट फॉर मी ऑल्सो so with this positive note Mr. Anupam we will end this show once again I thank you very much for joining us on Sunday आपके बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला थैंक यू वेरी मच Thank you so much. I am privileged to be with you, honored, and I wish you all the best, Prasad, for all the great work you are doing. Build this ecosystem, and people like us are always there around you and supporting you, and grow the way you have seen it. यस थैंक यू वेरी Thank you so मच much. Thanks to your team for organizing this. यस